everyone, this is Prabjeet. Welcome to our channel, and today I'll be showing you this stunning Lohri makeup look. So let's begin. First, I will start prepping her face. So here I'm applying Anastasia face oil. She has dry skin, so that's why I'm massaging into her face so that her face get fully hydrated. This time I'm starting with eye makeup first, and as she needs wing kind of eye look, so I'm using this eye stick tapes to be precise at outer eye corner. Applying the Tarte concealer as her eye base and setting that with MAC powder. Her dress has purple shade, so we'll try to color her eyes, which should actually enhance her face. Especially her eye looks so prominent and different. So starting with the light mauve color from my James Charles eyeshadow palette, and with the fluffy brush I'm blending this color on the crease line for the transition effect, basically. अब क्योंकि मेरी मॉडल को विंग लाइनर चाहिए, सो इसलिए मैं विंग स्टाइल में ही डार्क ब्लू कलर ले रही हूँ और उसको ऊपर से नीचे की तरफ सिर्फ आउटर कॉर्नर में एंड नियर टू द आई लिड्स मैं उसको पूरा अच्छे से पहले टैप करके वो कलर डिपॉजिट करूँगी, देन विद द फ्लफी ब्रश आई विल ब्लेंड दैट डार्क ब्लू शेड सो दैट जितनी भी हार्श लाइन्स हैं वो सारी निकल जाएँ। इस डार्क मूव कलर को मैं बिल्कुल लैश लाइन के साथ ही डिपॉजिट करूंगी, वहीं पे ब्लेंड करूंगी। इसको ऊपर की तरफ आई लिड पे बिल्कुल नहीं लेके जाना है, आउटर साइड से लेते हुए टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ द लैश लाइन मैं उसको लेके जाऊंगी ब्लेंड करते हुए।
आई शेडो की ओनली की इज़ ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग। जो भी शेड आप अप्लाई करें एक के साथ दूसरा शेड, दोनों के बीच में हार्श लाइन कभी नहीं दिखनी चाहिए। शुड ऑलवेज बी लाइक ब्लेंड, हाथ से करें ब्रश से करें, बट इट शुड बी ब्लेंडेड। अब मैंने हुडा ब्यूटी की पैलेट से ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का शिमर है, उसके अंदर प्रेस ग्लिटर है, सो मैंने वो अप्लाई किया है इनर कॉर्नर पे, आईलिड से लेके ऊपर क्रीज लाइन तक, सो दैट उसकी आईज और पॉपअप हो सके। एंड आउटर कॉर्नर्स में आई हैव डिपॉजिटेड दिस मूव कलर। सो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुली उसकी आईज एनहांस हो गई हैं, और विंग लाइनर भी अलग से प्रॉपर दिखाई दे रहा है। एंड inside inner corner is also populating with this gold shimmer shade। एंड आज कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मेरी कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, कुछ डिलीट हो गई हैं, एंड आई एम सो सॉरी, आई रियली रिग्रेट दैट, सो प्लीज bear with me for that error। फॉल्स आई लैशेज़ मैंने अप्लाई की हैं, एंड उसके साथ मैंने आई लाइनर, बहुत ही पतली सी थिन लेयर एक ब्लैक आई लाइनर की भी अप्लाई करी है। अगेन क्लीन हर फेस कम्प्लीटली विद द वेट वाइप्स। फेस को क्लीन करने के बाद मैं नेक्स्ट जितने भी क्लाइंट के डार्क सर्कल्स, छोटे से रेड कलर के पिंपल्स भी हैं कुछ उनके फेस के ऊपर, तो जस्ट टू हाइड ऑल दोस पिगमेंटेशन वगैरह, उनको डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए 2 शेड डार्क कंसीलर मैं उनके फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, नियर बाय आई एरिया और द माउथ एरिया, एंड थोड़ा बहुत चिक एरिया पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उनको कवर करने के लिए मैं अप्लाइंग दिस कंसीलर।
कंसीलर को मैंने बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया है, जस्ट डैप मोशन में ही उसको थोड़ा 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 फेस पे अच्छे से डैप कर दिया है। ब्लेंड नहीं करना है कंसीलर को। अब उसके ऊपर मैं फाउंडेशन की एक सिंपल छोटी हल्की लेयर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पंजाब शेड लिया है नार्स का, और जस्ट एक पंप लिया है और उसको उसके फेस पे अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ फाउंडेशन को ऑल ओवर हर फेस। अब इस फाउंडेशन को मैं पूरे ऑल ओवर फेस, हर ईयर्स, नेक, सब जगह पूरी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से उसको ब्लेंड करूँगी। फाउंडेशन को फेस पे अच्छे से ब्लेंड करने के लिए मैं डैप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। अब जैसे कि देख लो कि इसको अच्छे से ब्लेंडर को एक पूरे फेस पे बहुत ही लाइट हैंड से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मेरी क्लाइंट का फेस थोड़ा सा ड्राई है, तो मुझे थोड़ी सी ड्राइनेस फील हो रही थी, तो इसलिए मैंने हाइड्रेटिंग स्प्रे मैक का एक बार फेस पे अप्लाई किया है, एंड देन उसके बाद मैंने फिर 2 सेकंड वेट करने के बाद उसको ब्यूटी ब्लेंडर से वापस से डैप डैप मोशन में उसको मैंने ब्लेंड किया है। शी वॉन्ट हर फेस लुक स्लाइटली स्लिम और डायमेंशंस अच्छे से उसकी फेस के एनहांस की जाए। सो पिक्सी का मैं कंटोर स्टिक से उसके फेस पे डायमेंशंस दे रही हूँ। कंटोर अप्लाई किया मैंने जॉ लाइन पे और फोरहेड पे थोड़ा सा, और अब मैं उसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। अभी मैं आपको अपनी एक पर्सनल थॉट शेयर करती हूँ। जब मैं कुछ साल पहले अमेरिका यहाँ पे आई थी, तो इट वॉज लाइक अमेरिका, यू नो, बट जब मैंने ग्रेजुअली अब सीन की अमेरिका में जो इंडियंस हैं, उन्होंने इंडिया के फेस्टिवल्स को अभी भी यहाँ पे जिंदा रखा हुआ है। सो लोहड़ी सेलिब्रेट करना अमेरिका में शुरू में तो लगता था अरे कहाँ होता होगा, बट नो, आई वाज रॉन्ग। सो अभी भी यहाँ पे हम इंडियंस ने इंडिया के फेस्टिवल, उनके ओकेजन्स को यहाँ पे अभी भी दे सेलिब्रेट। सो इट्स रियली इम्प्रेसिव। नाउ कमिंग बैक टू मेकअप, अभी मैं मैक के मिनरलाइज पाउडर से पूरे फेस को सेट कर रही हूँ अच्छे से। पूरे ऑल ओवर द फेस में सेटिंग पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। शी इज़ अ गर्ल ऑफ ब्लशर। इतना सारा ब्लशर लगाना उसको पसंद है। सो आई वाज लाइक और लगा दो दीदी, थोड़ा और लगा दो टाइप्स। सो आई अप्लाइड टू मच ब्लशर एंड शी वाज लुकिंग प्रीटी एज वेल। सो ब्लशर लगाने के बाद मैंने एनेस्थेसिया का हाइलाइटर चैम्पियन शेड में उसको अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा हाई पोन चिक एरिया पे और ऑन द फोरहेड एरिया, स्लाइटली नोज एरिया। सो उसको अच्छे से हाईलाइट कर दिया है मैंने। फाइनली टू सेट द बेस, सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि पूरा मेकअप अच्छे से सेट हो जाएगा।
So friends, that's the final look. I hope you all liked or enjoyed this look. Don't hesitate to message me for any kind of any makeup related doubts, and please do consider me to subscribe me. Ta-da!